This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we're going to start a new playlist, Business Communication. चाहे वो BBA हो या MBA हो, दोनों के कोर्सेज को कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और लगभग सारे लेक्चर्स जो हैं इस प्लेलिस्ट में कवर किए जाएंगे BBA कोर्स और MBA कोर्स के लिए, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो CCSE हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, AKTU हो या और भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सारे टॉपिक्स आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे. बट रिमेंबर, अगर आप BBA के स्टूडेंट हो सो इतना ज़्यादा डीप आपको कई बार टॉपिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सामने सिलेबस हो. जो लेक्चर्स मैंने BBA के लिए कवर करवाए हैं आप सिर्फ वही करें. अगर आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन है सो यू कैन वॉच दी MBA लेक्चर्स, MBA पार्ट 2, बट स्पेसिफिकली यू हैव टू कवर BBA पार्ट. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेक्चर्स आपके हैं, कौन से लेक्चर्स आपके नहीं हैं. Let's start this lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box क्योंकि वहाँ पर available हो जाएंगे इस lecture के notes, साथ ही इस पूरी playlist के notes once the playlist is over. So let's start. प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए ताकि डेली टू डेली जब इसमें वीडियोस अपलोड हों सो आप उसको एक्सेस कर पाएं. ऑल्सो गाइज, यू ऑल आर ईमेलिंग मी और आप सब जिस तरीके का सपोर्ट दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी. और इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए और लोगों से शेयर करते रहिए और वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स बटन का भी आप उपयोग करिए, पूरा यूज करिए उसका. और I'm just continuously improving myself, the quality of the video, so I want your support in the form of thanks, using thanks button. So let's start this lecture. Introduction, meaning and objectives of business communication. Generally अगर हम बात करें communication की, not just business की तो हम बात करेंगे ही कि भाई business में क्या importance है business communication की. भाई सिर्फ business में ही नहीं, normal world में भी, and specifically or especially in today's world, how important communication is. You all know that we are facing such a time. I know कि मैं किसी और मोड पे जा रहा हूँ, but I have to tell this. We are in an era जहाँ पर communication matter करती है और हम लगातार जूझ रहे हैं इस चीज से कि there is a communication gap. Even when you have so many friends, still you don't have that deep connection with anyone because of the lack of communication. और इसके बहुत सारे कारण होते हैं इस lack of communication के. So communication, it's just not important in business but also in real life too, and you all know that and you all relate to me when I say this, whether we talk about friendships or relationships, because we can talk to everyone, right? But there is a deep understanding के लिए communication is must. And I think in my opinion communication, it's not just about listening, it's about, it's not just about speaking, it's about listening too. So let's start. I think थोड़ी सी clarity आपके दिमाग में आई होगी communication के regarding. Let's understand communication क्या है. So the word communication, it is derived from the Latin word से इसको derive किया गया. इस word communication को Latin word communicare से इसको derive किया गया है. और communicare का मतलब होता है to impart. impart करने का मतलब होता है basically transmission. किसी चीज को send करना from one source to another, maybe from one person to another. So basically if you're passing information or you're passing knowledge from one person to another, that is nothing but you're imparting something. So to impart. So word communications को derive किया गया है from the Latin word communicare, जिसका मतलब होता है to impart, to participate, to share, or to make common. We can say to make common, because when we communicate we try to make something common. That's what communication is. So communication, it's all about sharing, maybe your thoughts, maybe your ideas, maybe your opinions. Why you're doing this? To make something common. That's what the purpose of communication is. So it is derived from the Latin word communicare, that means to impart, basically transmission of information or maybe knowledge, to participate, to share something, that's what communication is, or to make something common. That's what communication is. So it's a process of exchange of facts. You're exchanging facts, ideas, opinions. हम communicate करते हैं दूसरों से. Definitely we are sharing our facts. We are sharing our ideas. That's what I'm talking about general way. We are sharing our ideas, we are sharing our opinions, we are sharing our facts. So उसी का exchange है communication.
It's an exchange of facts, ideas, opinions, and it acts as a means through which an individual or an organization share meaning and understanding with one another. Because of communication, एक meaning share कर पाते हैं हम एक दूसरे से. So basically it is exchange of facts, ideas, opinions, and ये एक bridge की तरह काम करता है. It acts as a means जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल, when we talk about a business or an enterprise, let's say an organization, so basically it acts as a means through which an individual or an organization it share meaning and understanding with one another. You can't think of any organization without communication. क्या communication के बिना कोई organization या business possible है? बिल्कुल नहीं possible है. So it's a key. We can say it's a lifeblood of an organization. So it's a transmission and interacting the facts. So basically, what is communication? Let's say we two are communicating. It means हमारे facts, हमारे ideas, हमारे opinions का transmission. What is transmission? एक sender है. Let's suppose आप receiver हो. So ideas, facts और जो भी हम सोच रहे हैं values, उनका transmission from sender to receiver, or maybe you are sender, I am receiver, so from sender to receiver, that's what communication is all about. It's the transmission and interacting the facts, ideas, opinion, feeling and attitudes. So I hope you got an idea about communication. अभी अगर नहीं आया है so कोई बात नहीं, we'll talk about it more here also, तो आपको और clarity जो है वो लगने वाली है. So we can say communication adds meaning to human life, definitely. You can't even imagine the human life without communication. It helps to build relationships, long-lasting relationships. It fosters love and understanding. It enriches our knowledge of the universe and makes living worthwhile. Let's talk about the meaning of business communication. जितना आप दिमाग में कम्युनिकेशन से वाकिफ हो सकते हो होइए अभी, ताकि क्लैरिटी जो है एक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपको आ जाए. तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा अगर क्लैरिटी आ गई. एंड दैट्स व्हाई मैं जनरल चीज़ें आपके लिए लाना चाहता हूँ, आपके सामने लाना चाहता हूँ. नॉट जस्ट जनरल चीज़ें बल्कि वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस सब्जेक्ट के लिए आगे. और कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएंगे अगर आप पहला लेक्चर देखोगे. सो फर्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई. So let's understand the meaning of business communication. Now the term business communication, let's understand कि business world में, अभी specifically और specially हम business world में इसको समझेंगे. अभी तो हम generally भी चीजें समझ रहे थे, but अब हम especially business world में क्या है. So the term business communication is used for all messages that we send and receive for official purpose, like running a business, managing an organization, conducting the formal affairs of a voluntary organization, and so on. एक एक करके पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा है. जो टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑल मैसेजेस. ये यूज होता है उन सभी मैसेजेस के लिए जो कि कहीं ना कहीं अकर कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऊपर से अगर मैं बोलूं, अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कम्युनिकेशन. दैट्स गोइंग टू बी योर इंटरनल कम्युनिकेशन. विल टॉक अबाउट इट. और अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहा है विद द एक्सटर्नल एंटिटी, maybe the government, let's say, maybe the shareholders, let's say, bahar se, or maybe the consumers. So that's what external communication is going to be. Right now the term business communication, it is used for all messages that we send or we receive for official purpose. किस purpose के लिए? Official purpose के लिए, business purpose के लिए. जैसे like running a business. So in order to run a business, or I can say in order to start a business also, communication is really very important. You need to communicate with the government in order to start your company. You need, then अगर company start हो गई है, then you need to communicate with the employees of the company. You need to tell them so many things, the policies and procedures, the values of the company, and so many things. What you want, what your mission and purpose is. Then again, you need to communicate to the consumers that what exactly you are selling. Okay, so a lot of things are involved. I'm just giving you a basic idea of that. So the term business communication, it is used for messages that we are going into, detail. So let's understand it very very properly. So the term business communication is used for all messages that we send and receive for official purpose. What are those official purpose or business purposes? Are running a business,
मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है. Because when I talk about managing an organization, it means I have to manage the employees of the organization. I need to tell so many things to the manager too, ताकि managers handle कर पाए effectively the employees. For managers, it is very important to motivate the employees, you know, to give them the suggestions or the things, equip them the things that they need to have while performing their work. So for that, communication is very important. The policies and procedures of the company, जो आपको उन्हें बताने, the guidelines you have to tell to the employees. For that also communication is important. So to run a business, to manage an organization, for almost for every process, like for planning, organizing, directing, controlling, communication is very important. And that's why I'm saying it's a lifeblood of an organization. Like blood is very important for us, for human body. In the same way, it's a lifeblood of an organization. Conducting the formal affairs of a voluntary organization and so on. Number of examples can be there. So basically it includes the process of creating, sharing, listening and understanding messages between different groups of people through written and verbal format. So basically एक process है creating, sharing, listening और understanding का the messages between different groups of people. किसके through? Written or verbal formats के through. It can be in written format, it can be in verbal format. We'll talk about oral communication. We'll also talk about we will also talk about written communication, we'll talk about para language, we'll talk about body language, all these things in the upcoming videos. So business communication, it occurs internally. So it can occur internally within the business, within the enterprise or within the firm, within the company. अगर communication हो रही है between the employees, maybe managers और employees के बीच में, owner और employees के बीच में, we can say owner या subordinates के बीच में, तो वो within the organization हो रही है. So within the boundary of organization अगर communication हो रही है, that's internal communication. Employee to employee, employer to employee. That's what internal communication is. Now if it is external communication, that means it can be business to business, it can be business to consumer. So I hope you got an idea. So I would say the way people communicate and operate within a business, that is very vital to know how successful the company will be in the business world. And that's why companies भी इस बात पर बहुत ज़्यादा focus करती हैं, attentive रहती हैं इस चीज़ में कि communication is the key. Communication जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए organization के अंदर. So communication is the lifeblood of the business. Just now I've told you, no business can develop in the absence of effective communication system. Now let's talk about the definition of business communication. हमने जो author लिए हैं यहाँ पर वो है Bernard Berelson. So according to Bernard Berelson, business communication is a transfer of information. Definitely, if I want to share some information with you, or maybe you want to share some information with me, so the transmission of information between two people here, or maybe more than two people here, that's what the transfer of information is, and that's what communication is. Not only it is a transfer of information, but it is also transfer of ideas, emotions. Real life और personal life में अगर business को side में रखे emotions का transmission आज के time पे अगर अच्छी तरीके से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. So it's a transfer of information, ideas, emotions, skills and so on. और mean क्या हो सकते हैं? It can be using symbols, it can be using words, using pictures, like I'm communicating with you right now through words. It's an oral communication. Figures, graphics and so on within the business world. So according to Bernard Berelson, business communication is a transfer of information, ideas, emotions, skills and so on using symbols, words, pictures, figures, graphics and so on within the business world. So I hope आपको इतना पार्ट जो अभी तक मैंने बताया वो क्लियर है. Next, we're going to talk about internal communication and external communication. Let's talk about internal and external communication now. मैंने पहले भी बताया कि भाई within the organization अगर communication हो रही है employee के बीच में, employee और manager के बीच में, owner या जो भी subordinates हैं उनके बीच में, तो क्योंकि वो organization की boundary के अंदर हो रही है, that's why it's a internal communication.
So internal communication is a type of communication basically where people within the organization communicate. So when people within the organization communicate with each other, it is internal communication. And why? Why they're doing internal communication? Why this internal communication is required? They do so to work as a team, so that they can work together as a team, because together में unity होती है. Different departments are there in the firm, different departments are there in the company. We can say departmentalism hota hai. We have a production department, we have a sales department, we have a marketing team, we have finance department. So a number of departments are there, and all these departments have their own plans and their own goals, and they're working accordingly. Now one department, sometimes have to take some decisions of other departments, या कुछ information दूसरे department से भी चाहिए होती है. And for that also communication is required. I'm just giving an example. So अब एक project में काम हो रहा है, definitely when they're working on one project, when they are working on some situation, so वो एक दूसरे के opinions और suggestions लेते होंगे और उस हिसाब से काम करते होंगे, एक दूसरे के feedback लेते होंगे, manager से feedback लिया जा रहा होगा. So that's why in order to work as a team, also they do so to work as a team and realize the common goal. So back of the mind में ये चीज़ रहती है कि they are working together so that they can achieve the common goal of the organization. Different departments are working on their goals, but when we look at the bigger picture is that we're working on the organizational goal. So they do so as a team. They do so to work as a team and realize the common goal. It could be official or unofficial. Now, ये communication official भी हो सकती है. It can be formal. It can be informal too. अब ऐसा नहीं है कि employee 24 like 9 hours अगर वो काम कर रहा है within a job, so definitely वो जब अपने like colleague से बात करेगा, so definitely वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बात करे काम की. नहीं, कई बार हॉबीज मैचअप होती हैं, इंटरेस्ट मैचअप होते हैं, वैल्यूज मैचअप होती हैं. दे स्टार्ट देयर रिलेशनशिप, वी कैन से द फ्रेंडशिप काम से अलग होती है जो कहीं ना कहीं. सो डेफिनेटली इट कैन बी ऑन पर्सनल लेवल आल्सो, इट कैन बी ऑफिशियल आल्सो, इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल आल्सो. मोड्स हो सकते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन. इट कैन बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, रिटर्न में हो सकती है, मेमोज दिए जा सकते हैं, बहुत सारे मेमोरेंडम्स क्रिएट की जाती हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं फॉर द एम्प्लॉइज. ऑफिस ऑर्डर्स हो सकते हैं, सर्कुलर, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग. दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. Now when we talk about external communication, so when people within the organization के लोग, if they are communicating outside the organization, maybe they are communicating with consumers. Definitely it's a very important communication. So when people within the organization communicate with anyone outside the organization, so when people inside the organization or within the organization they are communicating with someone or people outside the organization, then it is external communication. तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर सकता है विद देयर कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर सकता है विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, इट कैन कम्युनिकेट विद कंज्यूमर्स. सो सब कुछ आएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में. दीज पीपल मे बी क्लाइंट्स और कस्टमर्स, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक. Now let's talk about what is the purpose of communication, of business communication. What is the objectives, we can say, of business communication, as it is the lifeblood of an organization. Definitely इसके जो purpose होंगे वो भी उतने ही vital होंगे organization या किसी भी firm के लिए. So the first is to exchange information. किसी भी तरीके के information को exchange करने के लिए, ideas, facts को transmit करने के लिए, चाहे वो employee के बीच में हो, चाहे वो owner or we can say the managers are trying to convey to the employees or subordinates. किसी भी तरीके का information flow within the organization वो हो रहा है, that's all because of communication or business communication that is possible. So one of the objective of business communication is कि भाई ये information का जो flow है इसको smooth बनाया जा सके. To exchange information, basically that's what the one of the main purpose of business communication is, to exchange information, to facilitate the flow of information within the organization. So the main purpose of business communication is to exchange information with internal and external parties. Okay, internal communication occurs within the organization through orders, instruction. अब internal communication की अगर हम बात करें तो वो within the organization occur करता है. Maybe orders दिए जाते हैं, commands दिए जाते हैं by the superior level or maybe the top management. जो lower management है उनको orders दिए जाते हैं, उनको commandments दिए जाते हैं कि ये करना है तुम्हें. Instructions आते हैं, suggestions आते हैं, opinions हो सकते हैं employee के आपस में.
इस तरीके से कहीं ना कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन अगर करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो। हमने बताया कि दे डू सो टू वर्क एज ए टीम एंड रियलाइज द कॉमन गोल। इंटरनल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि भाई ताकि वो एक साथ काम कर सके, बिकॉज डेफिनेटली यूनिटी में दम होता है। तो 5 लोग एक ही प्रॉब्लम में लगे होते हैं, एक ही सिचुएशन या प्रोजेक्ट में क्यों लगाए जाते हैं? 5 लोगों को, एक बंदे को एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया जाता? हमेशा 6 या 7 लोग या 8 या 9 लोग, इट डिपेंड्स, एक प्रोजेक्ट में क्यों होते हैं? क्योंकि अगर एक साथ हम उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, उनके ओपिनियंस अलग अलग होंगे, डेफिनेटली उससे हेल्प मिलती है इन उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से करने में। क्योंकि एक का पर्सपेक्टिव होना और 4-5 लोगों के पर्सपेक्टिव होने में फर्क होता है। जब 4-5 लोगों के आइडियाज, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव जुड़ जाते हैं विद इन द सेम सिचुएशन, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन solving the problem, or we can say in doing that or performing that project, it becomes easier. So definitely for integration it is important. Different departments are made, so for that also communication or business communication is very important कि भाई different departments भी आपस में क्या कर सके, communicate कर सके for information. समटाइम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इट्स वेरी अंडरस्टैंड कि वो फाइनेंस को समझ ले, बजट को समझ ले, देन ओनली वो मार्केटिंग जो भी नीड्स है किसी पर्टिकुलर फर्म की, वो उस हिसाब से प्लान करे। सो डेफिनेटली आपस में भी डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो एक इंटीग्रेशन, एक टीम वर्क बना के रखता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्शन। लाइक मैनेजर जो है वो डायरेक्ट कर पा रहा है, कमांड कर पा रहा है, ऑर्डर दे पा रहे हैं। ओनर अगर ऑर्डर दे पा रहे हैं सबऑर्डिनेट को, दैट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर एबल टू डायरेक्ट एम्प्लॉय कि किस तरीके से उसको काम करना है। दैट्स ऑल थ्रू business communication. So it's very important for direction also. It is necessary to issue directions by the top management or management to the lower level. यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर शायद मैनेजर होगा, यस यहाँ पर मैनेजर होगा। So basically communication is necessary to issue directions by the top management or managers to the lower level. तो top management lower level management को instructions issue कर पाए, order issue कर पाए, that's so for that direction अगर direct करना है अच्छी तरीके से, that's all direction is। यही तो direction है कि भाई top level management जो है lower level management को instructions issue कर रहा है, किस तरीके से काम करना है, policies and procedures बता रहा है। So for direction also business communication is important, and that's why one of the main objective of business communication is direction को facilitate करना also। To develop plans को develop करने के लिए business communication is very important, और ये business communication का एक goal है, एक aim है कि plans को develop किया जाए। Formulation of plan is very crucial step in an organization. In every organization, it's very important step. Plans require information. Definitely plan में जब हम planning करते हैं तो it requires some information. आपको details की ज़रूरत होती है regarding different stuffs. So plans require information and managers must be communicated. मैनेजर्स को अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स उनके क्या होंगे। तो ये सारी चीजें मैनेजर्स को कौन बतलाएगा? इंफॉर्मेशन बतलाएगी, रिसर्च बतलाएगी। वंस अगेन देयर कम्स बिजनेस कम्युनिकेशन। So plans require information and managers must be communicated or supplied with necessary information in this regard, so that managers further क्या कर सकें, workers को जो subordinates हैं उनको बता सके further कि किस तरीके से काम करना है। So in all these things communication plays a very important role, starting from the owner, or we can say the top level management, to the manager, and then manager to the subordinates. For image building it is very important. Now how image building is related to business communication? किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन पर काम कर रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ की, इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहा है विद द एक्सटर्नल एजेंसीज और वी कैन से द कंज्यूमर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनहांसिंग द इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। Informing company policies and procedures, which is obvious कि companies की policies and procedures at the time जब आप enter करोगे organization में, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे organizations होते हैं, specifically if I talk about MNCs, वो आपको सारी information the first day, or we can say the first 2 or 3 days, they're going to tell you all about their company, what their mission, vision, what their values are, what the core values of the company is,
किस तरीके से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या वो फैसिलिटीज देती है, किस तरीके से वो काम करने का उनका तरीका है, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वो सब कुछ यही बताती हैं आपको स्टार्टिंग डेज में जो एमएनसीज होती हैं। दैट सो दैट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन टू, एंड दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू दैट इन्फॉर्मिंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा, जहाँ पर हमने बात की इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।